started, everybody loves grammar, most of you, and so, since you have written that in the chat box as well. So आज हम start करने जा रहे हैं, of course अपने कुछ topic related discussion को करने से, और of course ये पता चलेगा कि हमारी grammar का pattern क्या होगा. Of course मैं शुरुआत यहाँ पर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही renowned topic से, जिसका टाइटल है sentence, or should we call sentences. So this happens to be the first topic. I'm not going to be delaying this into the topic so that we get evolved into it all the way. I just want you to pay attention for only once. There are so many sentences to be have, but here, professionally and quite logically, we do have at least the 5 of the sentences to deal with. Now, let me just reveal with you the ideas here. So this happens to be the first one, known as assertive. Now, something that I'm not going to be teaching you so much from the beginners and from the basics, since I believe जो मैं आपको बता रहा हूँ वो that's actually the right grammar, the professional one, और इतना हमें चाहे हम लैंग्वेज पढ़ते हो ना पढ़ते हो, इंग्लिश को जब हम जानते होते हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए. So of course there are 5 specific types of sentences, one of which is assertive, the other is interrogative, the third do we get here is exclamatory, the fourth we have here is to be imperative, and hereby, of course, the last but not the least has to be objective. Now, before we talk about anything that we are supposed to learn today, we do have 5 versions of, or let me be the one to tell you, 5 genuine versions of types that we find in a sentence or in sentences. The first of which is, of course, what? A kind of a sentence which has to be simply a statement, or should we say the type of sentence to be this as sada jumle, then that has to be an inquiry. Of course, I am going to be speaking English, but here I would love to write a few things down in Urdu, so things would appear a bit familiar. If anyone wants to read it, can and understand that by doing so. So that's where we find questions. Exclamatory, it's where we talk about certain emotions and feelings. So that here I'm going to be writing things in Urdu, in English. Certain emotions. Of course, it gets indicated by the mark of exclamation. So that's because of that we use exclamatory. It's entirely based on assertive sentences, and with that, once we include mark of exclamation, it changes from assertive into exclamatory altogether. Then we get number 4 as to be the sentences of course without subjects. I mean,
the types of sentence that we find around where we don't have and we don't get to use subject or we drop them out so that it changes itself into imperative. Imperative को सिर्फ हुक्मिया जुमला कहना जरा गलत होगा. हुक्मिया in a sense could go elsewhere. स्कूल्स में भी आपने सुना होगा imperative हुक्मिया है. मैं नहीं समझता कि सिर्फ हुक्मिया है. अगर मुझे इसको उर्दू में कोई नाम देना ही है तो हम इसे ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ कुदरती जज्बात उमड़ आते हैं और कुदरती जज्बात हमेशा ऐसे जुमलों में नजर आते हैं जहां पर we get to drop subjects such as एक गिलास पानी तो पिला दो, something like that's not an order, that's not an order, that's a kind of a request. एक ऐसा रिक्वेस्ट कि जिसमें हम प्लीज और काइंडली लगाए बगैर all we are able to do is to generate a kind of a tone, a courteous tone, so that we come across knowing we have actually given some natural instinct into a sentence by dropping a subject down. And then we have the final of the part. Of course, we still have a few things into it. And this time, this is optative, where we talk about, prayers and so we talk about curses, and undoubtedly we do talk about some wishes as well. So these are what the types of sentences are all about. I mean, if I just want to be writing things all together in English, if you're prepared to find this to be a bit strange, a few written in Urdu, a few in English, so that has to be, of course, statements. That's, of course, regarding queries, and again inquiries. And the rest, as you can see before it. So anything that you want to ask me right now, you can go on asking. Yeah, it is because of that, or undoubtedly, Nadish. It's because of having lack of interest that the grammar sometimes shakes you up and actually it never wakes you up when it is needed. So anything that you would like to ask here, these are the common sentences we have. And so if you have no query into it, we would move on. Come on, is there any question? The basic concept, at least it can be said soon after learning this, that you now know the actual 5 kinds. All good with it? All right, so here we go. Now let us talk about another prospect of it before we get down deep into our topic. It is about not just having those 5 types of sentences up front. We always have 2 different aspects, only 2 different aspects in each of the types. Say, what those 2 aspects can be. The first of which is itself, on one hand, a positive version, whereas on the other, we do have a negative version. Now, we tend to learn grammar in multiple order and under multiple dimensions in a way that we, in our school days, learned affirmative on one hand, negative on the other. So that's not wrong, that's correct, but that's where, you need to understand that they are not 2, they are actually 1, and they are 2 aspects of one sentence. For example, assertive एक जुमले का नाम है, और assertive जो कि एक स्टेटमेंट को कहा जाता है, स्टेटमेंट हाँ में भी हो सकता है और ना में भी. अगर स्टेटमेंट हाँ में होगा, so it becomes not only positive, but in other words, इसका वही नाम पड़ेगा जो स्कूल के दिनों में आपने सुना था और जिसे आप कहा करते थे अफर्मेटिव. तो अफर्मेटिव ही कहें आप इसको, डिक्लेरेटिव कहें, लेकिन इसको एक्चुअली मैं प्रोफेशनली और जिसे बाहर लोग प्रोफेशनली पॉजिटिव कहना ज्यादा पसंद करते हैं. तो जैसे कि स्टेटमेंट हाँ में भी हो सकता है और ना में भी, ऐसे ही इंक्वायरीज और क्वेरीज यानी सवालात जो हैं
वो भी हाँ में भी हो सकते हैं और ना में भी। अब सवाल तो सवाल है, सवाल का हाँ और ना क्या होता है? सवाल का हाँ यहाँ पर इस तरह से जब आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना हो और आप सवाल पूछें, आर यू गोइंग समवेयर, और आप किसी से पूछते हैं क्या तुम कहीं जा रहे हो, या पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, दैट्स व्हाट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, यानी आप एक्चुअली इंक्वायर कर रहे हैं पोलाइटली। लेकिन जहां आपको कहीं ना कहीं 50% इल्म हो और आप कंफर्म करने की नीयत से पूछना चाहें, तो फिर आप उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सहारा लेते हैं। द क्वेश्चन कैन बिकम नेगेटिव वंस यू आस्क कीपिंग इन माइंड ये यकीनन वहीं जा रहा होगा, एंड यू स्टार्ट टू आस्क क्या तुम अली के घर नहीं जा रहे? इसका मतलब अली के घर जा रहे हो ये आप पहले से शायद कहीं ना कहीं जानते थे, एंड इन दैट केस यू जस्ट इंक्वायर्ड अबाउट इट in the likes of having not into it. So that's how a question can also become positive and negative. तो हर जुमले में हमें ये दो एस्पेक्ट्स तो मिलेंगे मिलेंगे। इसमें एक्सक्लेमेटरी आ जाएगी। When you start to talk about your certain emotions, of course you do have certain emotions in the likes of positive version as well as negative. One example can be wow, you have nailed it. कमाल कर दिया तुमने, क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया। या वाओ की बुनियादी तौर पर कोई मीनिंग नहीं, बट देन अगेन इट कैन बी सेड वाओ यू हैव नॉट गॉन बैक टू योर हाउस, यू आर स्टिल वर्किंग। अब देखें, नेचर खुशी की है, नेचर में ये नहीं हुआ कि मैं एक्सक्लेमेटरी अगर पॉजिटिव बना रहा हूं तो मैं खुशी की बात कर रहा हूं, और अगर मैं नेगेटिव पे जा रहा हूं तो मैं हमेशा गम की बात करूंगा। गम में भी हाँ और ना हो सकता है, खुशी में भी हाँ और ना हो सकती है, provided you're using it in a manner of having certain emotions to express. तो exclamatory sentence भी हाँ में भी बनता है, ना में भी, anyway possible. इसी तरीके से आप कभी ना कभी हुक्म देते हैं, या आप कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, you sometimes forbid people, urge people, जोर देते हैं, plead before them, आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ये सारी चीजें आप एक तो सब्जेक्ट के बगैर करते हैं, और जेन्युइनली वो एक सब्जेक्ट जो आप ड्रॉप करना पसंद करते हैं वो बहुत सारे नहीं होते, वो बेसिकली सिर्फ एक ही है, और वो है यू। यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंपेरेटिव में वैसे भी नहीं लगेंगे। जब आप सामने वाले से बात कर रहे होते हो ना, आप कहते हो एक गिलास पानी लाओ, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब आप इस तरह से जुमला अदा करते हो तो वो सामने वाले के लिए होता है, यानी आपका एक्चुअल मतलब होता है you fetch me a glass of water, but that's what you don't say. Of course you have a sentence with natural instinct, किसी को हुक्म दे रहे हैं, natural instinct में आप किसी को डांट भी सकते हैं, किसी को तंबी भी कर सकते हैं, so even those can go with positivity along with the negative versions as well. अब imperative इन दोनों में चला गया, and that's we are down to the final one, that's optative. तो optative में आप दुआएं दें when you talk about prayers, आप बद दुआएं दें when you talk about the curses, और जब आप unfulfilled तमन्नाओं की बात करें, that's not just wishes but what kind of wishes जो आप fulfill नहीं होगी, such sentences are duly considered to be in the part of optative version. तो optative version को सिर्फ दुआइया जुमले कहना भी सही नहीं है, लोग कहते हैं इसे हुक्मिया जुमले कह देते हैं, इसे दुआइया कहते हैं। मैं कहता हूँ यार अल्लाह को मानो भाई, किताबों में आप छाप कर स्टूडेंट्स को यहाँ तक पढ़ा देते हो, but how can you say specifically कि ये हुक्मिया है या ये दुआइया जुमला? Of course it's based on entire amount of feelings and natures, but there are three that we find here inside of the fold of optative. तो optative भी हाँ में हो सकता है और ना में हो सकता है। So that's the first idea that I want you all to learn so that we can go on doing multiple things into it. यहाँ पर किसी को कोई सवाल करना हो तो kindly पूछिएगा। I expect some, of course, queries if you do want to, या इसको अगर आप कहीं नोट करना चाह रहे हैं तो इसको नोट भी करते रहें साथ साथ, because that's what the basic idea is before we get down to talk about anything.